Now next one is the determination of pKa. Solubility एनालिसिस में क्या क्या करना है आपको? pKa करना है, pKa एनालाइज करना है, ठीक है. pKa कैसे डिटरमाइन कर सकते हो आप? So different method for determination of pKa. pKa is nothing but the dissociation constant. Dissociation constant is a function of different polar groups of the compound. Okay, unionized form of drug is a lipid soluble and that is easily permeated through the biological membrane. So means lipid soluble drug will cross easily biological membrane, and ionized form of drug is not lipid soluble, and that's why it is a less permeated across the cell membrane. That's why you have to calculate the pKa of your drug. Now it can be calculated by Anderson-Hasselbalch equation. So Anderson-Hasselbalch equation, it is a nothing but the relationship between pH and pKa. So for the basic compound, pH is equal to pKa plus ionized amount of ionized divided by amount of unionized drug. याद रखो आप, pH is equal to pKa plus ionized divided by unionized for the basic compound. For the acidic compound, it is exactly opposite. For the acidic compound, pH is equal to pKa plus unionized divided by ionized. Basic के लिए क्या है? pH is equal to pKa plus ionized form of drug percent ionized divided by percent unionized. You can calculate the percent ionized or percent unionized using these formulas. For acidic compound, pH is equal to pKa plus unionized divided by ionized. It is Anderson-Hasselbalch equation. So percentage ionization is equal to, अगर इसको rearrange करेंगे ये equation को, तो you will get percentage ionization equal to 10 into pH minus pKa divided by 1 plus 10 raised to pH minus pKa. Okay, percentage ionization कैसे calculate करेंगे? Percentage ionization is equal to 10 raised to pH minus pKa divided by 1 plus 10 raised to pH minus pKa. Determination. Now this pKa is determined by different methods like spectroscopy, potentiometry and titrimetry. Spectroscopy मतलब UV spectroscopy से इसको आप कर सकते हो pKa डिटर्मिनेशन. कैसे करेंगे? जो पीक आता है, जो यूवी में जो पीक आता है आपका, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रा. सो स्पेक्ट्रल शिफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ chromophore. Chromophore is nothing but the ionizable group in the compound. So that's how you can determine the pKa using spectroscopy, UV spectroscopy. पोटेंशियोमेट्री, ठीक है. पोटेंशियोमेट्री क्या है? पोटेंशियोमेट्री और टाइट्रीमेट्री में क्या होता है? जैसे आपने एसिड लिया, बेस लिया, न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया. एट द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन pKa विल बी हाफ ऑफ दैट न्यूट्रलाइजेशन. मतलब न्यूट्रलाइजेशन का पीएच कितना है, उसका आधा क्या होगा? pKa होगा. वैसे पोटेंशियोमेट्री में तो आपको डायरेक्टली करंट मिल जाता है, वहां pKa डायरेक्टली मिल जाता है. और वीकली एसिडिक ड्रग pKa इज लेस देन 3, whereas the basic drug it is between 8 to 9. Generally unionized form of drug is well absorbed from the GIT. pKa determination by UV. Spectral shift is detected and it is preferred method, then potentiometry, then other method, then another method is the potentiometry. ये तीन मेथड है. देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोटेंशियोमेट्री एंड टाइट्रीमेट्री. आपको कभी कभी ये भी पूछेगा कि pKa के डिटर्मिनेशन के लिए कितना मेथड है, और वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ pKa. और आपको ये तीन ऑप्शन में दूसरा चौथा ऑप्शन देंगे. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the solubility. So if you increase the temperature by 10 degrees Celsius, there will be 5-fold increase in the, मतलब अगर आपने सोल्यूबल आपका कंपाउंड नहीं है, आपने डाला है लेकिन उतना सोल्यूबिलिटी नहीं है, और उस सॉल्यूशन को आपने हीट किया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो उसका सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 5 टाइम्स. So if there is increase in 10 degrees Celsius of temperature, so it will increase 5-fold times the solubility. Remember, नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नाइपर में आता है. Solubilization using co-solvent like ethanol, propylene glycol, glycerine. Solubility of less soluble compound can be increased by addition of these water soluble solvents known as a co-solvents, and the phenomenon is known as a co-solvency. Okay, so the phenomenon of increasing the solubility of weak electrolytes and non-polar molecule by adding of water miscible solvent in which drug has a good solubility known as a co-solvency. मान लीजिए कि आपका एक ड्रग है कि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है लेकिन वो इथेनॉल में सोल्यूबल है, ठीक है. तो आपको क्या करना है कि उसको पहले इथेनॉल में डिसॉल्व करना है और फिर वाटर में वो सॉल्यूशन डालना है, तो क्या होगा? वो soluble हो जाएगा वाटर में भी. That phenomenon is known as a co-solvency. This was question in GPAT21. Now there are some solubility terms that is important and they can ask question on this. Solubility terms
नंबर ऑफ मतलब किसमें सोल्यूबल किसको बोलेंगे, फ्रीली सोल्यूबल किसको बोलेंगे, नो स्लाइटली सोल्यूबल किसको बोलेंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल किसको बोलेंगे. सो दीज आर नथिंग बट द solubility description or solubility description terms. So these are very important. Sometimes they used to ask question on this, and a lot of times they have already asked the question on this. Now part of solvent required to dissolve one part of solute. मतलब आपका solute का एक part और solvent का part. Number of parts of solvent required to dissolve one part of solute. Okay? So if a part of solvent required to dissolve a solute of one part of solute, याद आ रहा, समझ में आ रहा है, part of solvent required to dissolve one part of solute. ठीक है, कितना पार्ट लग रहा है सॉल्वेंट का उसको डिजोल्व करने के लिए. एक मतलब आप पार्ट मॉलिक्यूल ले लो, मॉलिक्यूल का एग्जांपल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजोल्व नंबर ऑफ डिजोल्व वन मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट. ठीक है, या ऐसा है. So if number of parts of solvent required to dissolve one part of solute is less than 1, then you can call it as a freely soluble. So if number of parts of solvent required to dissolve one part of solute is between 1 to 10, अगर 1 to 10 part लग रहा है आपको solvent का to dissolve one part of solute, it is a freely soluble. Then if 10 to 30 parts of solute is required to dissolve a solute, then it is soluble. If it is a 30 to 100, it is known as sparingly soluble. If it is 100 to 1000, it is known as slightly soluble. If it is 1000 to 10,000, it is very slightly soluble. And if it is more than 10,000, it is known as a practically insoluble. So ये क्वेश्चन आया था 2-3 बार. ठीक है, इसका एक चार्ट आप बुक में भी दिया है मैंने चार्ट, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लो या फिर पूरा याद ही कर लो. सो अगर एक पार्ट मतलब देखो, मतलब 1 mole of 1 part of your solvent dissolves 1 part of your solute, then it is a very soluble. Okay, if less than 1 or 1, it is a very soluble. If 1 to 10 part of solvent is required to dissolve 1 part of solute, then it is a freely soluble. If 10 to 30 part of solvents are required to dissolve 1 part of solute, then it is soluble. ठीक है, जैसे जैसे पार्ट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ते जाएगा वैसे सोलिबिलिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा. ठीक है, सो इफ 30 to 100 parts of solvent is required to dissolve one part of solute, मतलब 1:1 है तो फ्रीली सोल्यूबल है, लेस देन 1 है तो फ्रीली सोल्यूबल है, 1 है तो फ्रीली सोल्यूबल है. अगर ज्यादा लग रहा है सॉल्वेंट का पार्ट डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन सोल्यूट का पार्ट कितना है, एक ही है, तो क्या होगा, सोलिबिलिटी कम हो जाएगा. सो इफ 100 to 1000 part of solvent is required to dissolve one part of solute, then it is known as slightly soluble. If 100 if 1000 to 10,000 part is required, 10,000 part of solvent is required to dissolve one part, then it is a slightly soluble, very slightly soluble. And if it is more than 10,000 part of solvent is required to dissolve one part of solute, it is known as a practically insoluble. Okay, just try to remember these things. Then solvent and solvent strength, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ये नाइपर में पूछता है मैक्सिमम टाइम. सो solvent strength of solvent to dissolve the solute. So glycerol भी ले आओ 0.5 strength, ethylene glycol भी ले आओ 1, ethanol ले आओ 1.5, dimethyl formamide और dimethyl formamide भी ले आओ high, that is a 4. It is a highly polar solvent, DMF. DMF has a solvent strength of 4. याद रखो. Now partition coefficient. Now what is partition coefficient? So partition coefficient is nothing but the rate and extent of absorption is affected by partition coefficient. It is a measure of lipophilicity. Partition coefficient क्या है कि आपका जो कंपाउंड है वो लिपिड फेज में कितना डिसॉल्व होता है या फिर वाटर फेज में कितना डिसॉल्व होता है, मतलब इज द रेशियो ऑफ सोल्युबिलिटी of your compound in the organic phase divided by water phase. Means it is the ratio of solubility of compound in the organic phase to the aqueous phase. ठीक है, so it will affect the rate of absorption and extent of absorption. That's why you have to calculate the partition coefficient. Okay, so partition coefficient is equal to nothing but is equal to concentration in organic phase divided by concentration in the aqueous phase. Dissolution of drug
is controlled by several physicochemical properties like chemical form, crystal habit, particle size, surface area, solubility, and weighting property of the solute. So dissolution is a nothing but the point at which your drug will go into the solution. That is nothing but the dissolution, and it is controlled by several physicochemical properties like chemical form of drug, crystal habit of drug, particle size, surface area, solubility, and weighting property. Now dissolution rate means rate at which your drug goes into solution. Okay, that is a dissolution rate. Dissolution rate is the dissolution rate in which surface area remains constant during the dissolution, and this is given by Noisy-Whitney equation. This Noisy-Whitney equation is nothing but the dissolution at constant surface area. इसमें क्या होता है कि surface area constant रखा जाता है कि एक constant surface area is exposed to the medium, dissolution medium, and that is given by Noisy-Whitney. That is a Noisy-Whitney equation. It is a dc upon dt is equal to c. dc upon dt is equal to t into a into cs minus c divided by h. I will explain this term one by one. dt upon dc upon dt is nothing but the dissolution. A cs minus c divided by h. Dc is the rate of dissolution of particle. Now d is the diffusion coefficient. A is the d is the diffusion coefficient of drug solution in the contact with GIT. GIT में जो ड्रग कांटेक्ट में है GIT फ्लूइड्स के, वहाँ पे डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कितना है उसको d बोलेंगे. A is the diffusion constant, ठीक है, for a drug particles in a contact with GIT fluid. H is nothing but the thickness of air around the particle, and CS is the saturation solubility of drug in the solution, the diffuse layer, and C is the concentration of drug in the GIT. ठीक है, जहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है वहाँ के नजदीक का एरिया जो है वहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा ड्रग का, दूर नहीं, ठीक है, दूर कम होगा. तो CS is nothing but the thickness of that saturated layer. Just remember dissolution is given by Noisy-Whitney equation. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था एक बार. Apparatus used for dissolution, that is constant surface area dissolution. Okay, so apparatus that is known as a Wood's apparatus. Wood's apparatus is nothing but the dissolution with constant surface area. Okay, इसमें एक ये जो वुड्स है, वुड्स ने प्रपोज किया था apparatus, उसको बोलते हैं Wood's apparatus. Okay, so in that there are two types: rotating disc apparatus and static disc apparatus for the dissolution or at a constant surface area. Okay, so rotating disc apparatus and static disc apparatus. You can see it is a rotating disc apparatus. ये यहाँ पे rotating disc apparatus है और ये static disc apparatus. ये देखो ये रोटेट होता है ऐसा. इसमें इसके अंदर ड्रग टैबलेट को यहाँ पे टैबलेट रखना है, तो ये सरफेस एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा ना. देखो यहाँ पे ये सरफेस एरिया कितना है, कांस्टेंट है. ये रोटेटिंग है, ये स्टैटिक है. rotating disc apparatus, static disc apparatus. Then there is another one term known as intrinsic dissolution rate. So intrinsic dissolution rate, it is given by rate of dissolution milligram per minute per centimeter square. Then when the rate of dissolution of pure API means आपका pure drug powder, when parameter like surface area, temperature, agitation or stirring speed, pH, ionic strength kept constant. when सी नॉर्मल डिसोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें बहुत सारा फैक्टर कांस्टेंट नहीं रखते अपन, जैसे अपना पीएच कांस्टेंट नहीं होता, आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये बहुत सारी चीज नहीं कांस्टेंट होती. तो व्हेन टेम्परेचर, देन स्टरिंग स्पीड, पीएच, देन स्ट्रेंथ, ionic strength is kept constant, and the rate of dissolution is determined, that is known as the intrinsic dissolution rate. It allows the screening of various physiological conditions. It allows the screening of drug under various physiological conditions. Intrinsic dissolution rate should be independent of the boundary of thickness layer and volume of solvent. Intrinsic dissolution rate measures the intrinsic property of drug only as the function of dissolution medium. मतलब intrinsic dissolution rate क्या होता है कि ये सिर्फ इसमें ये पैरामीटर्स जो है वो कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है, इसके बारे में अगर ज्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखो, हाइड्रोडायनामिक कंडीशन होता है. तो ये लाइन समझने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. DCS divided by H is the hydrodynamic condition. Then ionic strength of isotonic 0.9% sodium chloride is
0.15, ये याद रखो, एक बार इससे एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड, सो इट इज अ 0.15. देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी एक और क्वेश्चन आया था. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज नथिंग बट 80. भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आपको देखना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वो आप बाद में देख लेना. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नाउ मिलार्ड रिएक्शन, so what happens sometimes, so Millard reactions, what happens sometimes, so you are formulating your tablet with additives, you are formulating your tablet with excipients, okay. So one of the most important excipient is lactose, okay. Lactose occurs in a different form: anhydrous lactose, hydrous lactose, lactose monohydrate, lactose dihydrate, like that. What happens if your drug is amine containing drug, so amine containing drug and lactose, so hydrous lactose react with the amine containing drug and result in the brown colored precipitation or brown colored product. अगर आपका मान लीजिए आपका फिनेरामाइन ड्रग है और उसमें आपने क्या किया, लैक्टोज एज अ डाइल्यूट ऐड किया और टैबलेट बनाए, तो क्या होगा कि जो अमाइन कंटेनिंग ड्रग है वो लैक्टोज के साथ रिएक्ट होगा और वो फुरफुरा अल्डिहाइड बनाएगा, फुरफुरा अल्डिहाइड बनाएगा. दैट इज अ रिएक्शन प्रोडक्ट, ओके. उसमें CONH बॉन्ड फॉर्म होता है. दैट product has a product is having brown color, your white tablet will become brownish in color, so that is nothing but the Millard reaction, or sometimes it is also known as a browning of tablet. ये reaction को browning of tablet भी बोलते हैं. So hydrous lactose will react with the free amino group of drug, result in the brown colored product, okay. So there is a formation of CONH bond. CONH bond किस में होता है, पेप्टाइड में होता है. So sometimes the product of Millard reaction is also called as a peptide, okay, but it is not a true peptide. ये पेप्टाइड नहीं होता, ये फुरफुराल पॉलीमर होता है लैक्टोज और अमाइन का रिएक्शन का, okay. Now surface color of tablet is measured by diffused reflectance spectroscopy, it or ट्राई स्टिमुलस रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये याद रखो लाइन, सरफेस कलर ऑफ टेबलेट और सरफेस कलर ऑफ एनीथिंग कैन बी measured by diffuse reflectance spectroscopy or tri-stimulus reflectance spectroscopy. Reducing sugar readily react with the primary amine and some amino acid result into Millard reaction. Drug with 10 or 20 amine function gives brown color called as a browning reaction. ये मैंने बोला है. अभी क्या होता है इसमें, सिर्फ जो अनहाइड्रस लैक्टोज जो है, अनहाइड्रस लैक्टोज मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहता. हाइड्रस लैक्टोज मतलब क्या, उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है. सो ओनली हाइड्रस लैक्टोज विल रिएक्ट विद द अमाइन कंटेनिंग ड्रग to give browning reaction, to give Millard reaction, but anhydrous lactose will not react with the amine containing drug, it will not give browning reaction. So remember, इस पे ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ भी चुका है, अभी आगे आएगा नहीं आएगा ये किसको नहीं मालूम, ठीक है. सो इतना याद रखो कि Millard reaction कौन देता है, हाइड्रस लैक्टोज, अनहाइड्रस लैक्टोज नहीं देता, ठीक है. रिएक्शन प्रोडक्ट क्या है, drug like, for example, drugs like amphetamine, isoniazid, dextroamphetamine, norepinephrine, ठीक है. Okay, these drugs will react with hydrous lactose and will form a product known as 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furfural, and that is the reaction product of Millard reaction. And the product has some CONH bond, that's why sometimes it is known as a peptide, but it is not a peptide. Now stability, okay, कि आपका प्रोडक्ट कितना स्टेबल है. सो स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग ऐसे इज नथिंग बट द HPLC, ओके, ये याद रखो. देन इफेक्ट ऑफ pH, देन आयोनिक स्ट्रेंथ, देन को-सॉल्वेंट, लाइट टेम्परेचर, ऑक्सीजन. अभी देखो, अगर इफेक्ट ऑफ pH मतलब एसिडिक pH पे क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा नहीं होगा, pH बढ़ाएंगे तो डिग्रेडेशन कितना होगा, ठीक है. इसके भी ऊपर आयोनिक स्ट्रेंथ, को-सॉल्वेंट, लाइट, व्हाट इज फोटो डिग्रेडेशन, व्हाट इज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका डिग्रेडेशन कैसा होगा, ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो कैसा होगा, उसके बेसिस पे उसका स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है, ठीक है. और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो बुक में से पढ़ लो, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं.
इतना याद रखो कि स्टेबिलिटी indicating assay is determined by HPLC. Now stability of solution is done using the probing experiment at extreme pH condition like 0.1 normal HCl water in OH. Again Anderson acid base. Now there are different temperature terms. What is cold temperature, what is cold temperature, what is room temperature, what is warm. So sometimes ये भी पूछा है कभी. So what do you mean by cold temperature? If temperature range is between 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius, it is a cold temperature. आप देखो फ्रिज में कितना टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अ कोल्ड टेम्परेचर. फ्रिज में एक ऊपर वाला बॉक्स होता है ना, कूल टेम्परेचर क्या है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस. तो 8 to 25 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट द कूल टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस. वार्म टेम्परेचर कितना होता है 25 to 40 डिग्री सेल्सियस. हॉट टेम्परेचर कितना है मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस. So if 2 to 8 degree Celsius temperature is there, you can call it as a cold temperature. Cool temperature कितना है 2 to 25. Room temperature कितना है 35. Warm temperature किसको बोलेंगे 25 to 40 degree Celsius. Hot temperature किसको बोलेंगे more than 40 degree Celsius. Then polymorphic study. It is done by X-ray crystallography, X-ray diffraction. शार्प पिक, अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन में शार्प एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में शार्प पिक आया तो दैट विल इंडिकेट द प्योर क्रिस्टल. उसके उसका एक इक्वेशन होता है, उसको बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन. सो एक्सरे डिफ्रैक्शन इज बेस्ड अपॉन द ब्रैग्स इक्वेशन एंड इट इज नथिंग बट द 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 2d sin theta. n lambda is equal to 2d sin theta. D is nothing but the distance between two crystals. Just remember X-ray diffraction is based upon the Bragg's equation. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था. n lambda is equal to 2d sin theta. Okay, and crystal shapes, outer surface crystal shape is determined by this X-ray diffraction. Then differential scanning calorimetry. Crystal purity is determined by DSC. Sharp peaks indicate pure crystal. Glass transition temperature क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये सब इंपॉर्टेंट है. सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मीन्स TG. Glass transition temperature TG. So it is a temperature of polymer at which it gets converted from glassy state to the rubbery state. Transition temperature is the temperature of polymer at which there is a conversion of polymer from glassy state to rubbery state and vice versa. Okay, for example temperature या temperature and time. ठीक है, सो जैसे पॉलीमर है, पॉलीमर नॉर्मल है, अभी यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्टेट है, यहाँ पे अलग स्टेट है. सो कन्वर्जन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रबरी स्टेट टू द ग्लासी स्टेट टू द रबरी स्टेट, दैट इज नोन एज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर TG. ओके, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़े, आप देखो आपने अगर कोई पॉलीमर लिया, उसको हीट किया आपने, तो इनिशियली क्या होगा वो मेल्ट होगा और एक ग्लॉसी बन जाएगा. बाद में अगर ज़्यादा हीट लगेगी उसको तो पूरा पूरा लिक्विड फॉर्म में आएगा. ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है ग्लास ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर एट विच द पॉलीमर at which there is a conversion of polymer from glossy state to the rubbery state, for which there will be melting of your polymer, below which there will be crystallization of polymer. ये अपन ने देखा था, ये Car's index is known as a percent compressibility. So how it is calculated? Tap density minus bulk density, true density minus bulk density divided by true density into 100. That is a Car's index. So it is a measure of flowability. Car's index is also known as a percent compressibility. So if it is between 5 to 15, then the flow of powder is excellent or free flowing. If it is 12 to 16, it is good. 18 to 21, then it is fair. If it is between 23 to 28, it is poor and passable. If Car's index is between 28 to 35, it is a poor flow. If it is between 35 to 38, it is very poor flow in case of fluid is cohesive. And if it is more than 40, it is extremely poor. Then angle of repose, tan theta is equal to 2h divided by d. It is also measure of flow property. So if angle of repose of powder is less than 25, then the flow is excellent. ये क्वेश्चन आया था GPAT में. If angle of repose is between 25 to 30, then the flow of powder is good. If it is between 30 to 40, it is possible, and angle of repose is more than 40, it is a very poor flow. Then Hausner's ratio, tap density minus bulk density divided by tap density. So if Hausner's ratio is less than 1.25, it is a good flow.
If it is between 1.25 to 1.5, it is a moderate flow. If it is more than 1.5, it is a poor flow. Okay, so this was all about the today's session.